Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn Standard 10 English Medium exercise 13.3. So in this exercise, questions are given. So first we have solved exercise 13.1 on the basis of surface area and exercise 13.3 on the basis of one shape can be melt or recast and convert into another shape, and exercise 12.2 on the basis of वॉल्यूम. सो ये एक्सरसाइज में हम सपोज ये एक शेप होगा, उसको हम मेल्ट करेंगे, रिकास्ट करेंगे और कन्वर्टेड इनटू अदर शेप. लाइक फर्स्ट एग्जांपल, सो हियर स्पीयर शेप है, वो स्पीयर शेप को हमें कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल शेप में. इट मीन्स सो ओरिजिनल शेप एंड न्यू शेप, सो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा बट क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है. सपोज वन स्पीयर में से हम स्मॉल क्वांटिटी और रेडियस और हाइट स्मॉल लेके काफ़ी सारे सिलिंड्रिकल बना सकते हैं. तो वही बेसिस पे एक्टिविटी है. ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक स्पीयर को मेल्ट करते हैं तो उसकी जो सिलिंड्रिकल बनता है उसकी रेडियस दी गई है बट हाइट हमें पता नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें हाइट फाइंड करनी है. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन डिटेल्स, रेडियस ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, height of cylindrical find. So volume of sphere is equal to volume of cylindrical. Now 4/3 pi r cube is a volume of sphere, pi r square h is a height of cylindrical. So pi cancel, 4/3 into r cube. So value of r, it means value of sphere 4.2. So written down as a 42 and 42. So in down part 10 and 10. Pi as it is r, pi r square h. So r value is a radius of cylindrical. So also count in down part because multiplication, so converted into division, therefore 6 multiplied by 6. So remaining part is our h. Now further this simplification, after value of h is equal to 2.74 centimeter, height of cylindrical. Now next question, when metallic sphere of ready, so consider as a r1, r2 and r3. Metallic sphere, so metallic sphere r1 is equal to r2 is equal to r3. r1 is equal to 6 centimeter, r2 is equal to 8 centimeter and r3 is equal to 10 centimeter. So find the when this all three sphere radius can be melt and converted into another single sphere. So metallic sphere can be melt and converted into single sphere, radius r can be found. So both have equal volume, therefore volume of resulting sphere is equal to addition of three sphere. So volume of three metallic sphere, therefore 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube, 4/3 pi r3 cube. 4/3 pi common, r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. Now put value of all terms. 4/3 pi is equal to taken as a remain, and volume of resulting sphere, it means 4/3 pi r cube. So 4/3 cancel, therefore r cube is equal to r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. Therefore r1 cube it means 6 cube plus 8 cube plus 10 cube. Therefore r1 cube is equal to 6 cube 216 plus 8 cube 512, 10 cube 30. All term addition is 1728 r cube.
Therefore value of r is equal to 12 centimeter. So resulting sphere radius is equal to 12 centimeter. Now question number 3, 20 meter deep well with diameters 7 meters. So wells has a consider as a cylindrical shape. So the cylindrical well radius is equal to 7 by 2 meters, because diameter is equal to given centimeter. So radius is equal to 7 by 2 meters, and height h is equal to 20 meters. First part is completed. Now next is for cuboidal platform, length is equal to 22 meters. Length have 22 meters, breadth 14 meters, and height h equal to find. So वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल. सो हमें क्या करना है, उसमें वेल में से जो मिट्टी होगी डग आउट करना है और उससे प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. तो यहाँ पे सेम इक्वेशन होगा. सिलिंड्रिकल वेल्स जो उसमें से मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म में जो यूज होने वाली है उसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा. सो वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज फॉर द cuboidal platform, it means volume of dug out from well is equal to volume of earth use for from the cuboidal platform. So pi r square h is equal to L into B into h. Therefore pi r square, consider as a pi r square h is equal to L into B into h. So h equal to, find out, capital H can be considered, find out. Therefore pi r square h L into B is equal to h. Therefore pi means 22 into 7 into 7 into 20, 22 by 7. Pi means, now L is equal to 2, B is equal to 7 by 2, 7 by 2, and L is equal to 22, B is equal to 14. So after completed, find out 2.5 meter height of this platform. Thank you friends.